हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निशन सॉल्वर। हमने अभी अपने रिसेंटली वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग अपने जावा स्प्रिंग बूट के साथ ईमेल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। ईमेल सर्विसेज लाइक जीमेल को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप लोग का, तो उसके लिए मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट और एनी बैक एंड डेवलपमेंट की बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो आप किसी आप डेटाबेस हिट कर रहे हो, आप किसी दूसरी इंटरनल एपीआई हिट कर रहे हो, आप कोई और प्रोसेस कर रहे हो जावा के अंदर, तो बहुत सारे एक्सेप्शंस आ सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप अगर डेटाबेस को हिट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका डेटाबेस आपका पासवर्ड गलत हो, या फिर वो स्ट्रिंग गलत हो, या फिर डेटाबेस डाउन हो, अनऑथराइज आ रहा है, तो कुछ भी एक एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, राइट। अगर आप कुछ फाइल रीड कर रहे हो तो उसमें आपका आईओ एक्सेप्शंस आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस आ सकते हैं, राइट। तो हम कैसे उन एक्सेप्शंस को पहचानेंगे, और ताकि यूज़र को वो एक्सेप्शन मैसेज ना दिखे जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन मैसेज होता है। फॉर सपोज अगर मैं डेटाबेस का ही एग्जांपल लूँ, तो एक कॉलम है उस डेटाबेस में जिसमें सिर्फ वो डेटाबेस सिर्फ वैरकैर लेता है, राइट। वो पर्टिकुलर कॉलम वैरकैर ही एक्सेप्ट करता है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है। बट यूज़र ने कुछ ऐसा फिल डाल दिया, फिर कुछ ऐसा बग की वजह से उसमें नंबर स्टोर कराने की कोशिश की जा रही है, तो डेटाबेस तो आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन काइंड ऑफ एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो अब जब वो एक्सेप्शन थ्रो होता है ना, तो उसका जो मैसेज डेटाबेस के पास से आएगा वो बहुत लंबा चौड़ा एक पूरा स्टैक ट्रेस आता है, काइंड ऑफ आइडिया। अगर यूजर को वो स्टैक ट्रेस दिखेगा तो वो तो पागल हो जाएगा, भाई मैंने किया क्या, उसको समझ में ही नहीं आएगा एंड यूजर को, बिकॉज एंड यूजर इज नॉट टेक्निकल ऑफ कोर्स, राइट। और वो मैसेज डायरेक्ट यूजर को दिखा देना भी सही बात नहीं है। तो कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि ये डेटाबेस एक्सेप्शन हुआ है, मतलब इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन हुआ है, और इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं भाई आपका ये फील्ड गलत था, तो इसमें आप ये डालो, ताकि यूज़र को एक मीनिंगफुल एक मैसेज जाए, राइट, जो यूज़र को समझ में आए, यूज़र के लैंग्वेज में एक मैसेज यूज़र को मिले, ताकि यूज़र को समझे कि भाई गलती क्या हुआ है। करेक्ट। बाकी आप जो एक्चुअल एक्सेप्शन मैसेज है उसको आप लॉक करा लो अपने डिबगिंग प्रोसेस के लिए, दैट्स अनदर थिंग। बट यूज़र को वो वाला मैसेज नहीं दिखना चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन में आता है। तो हम लोग वही सीखेंगे कि कैसे हैंडल करते हैं एक्सेप्शंस को, और पर्टिकुलर एक्सेप्शंस पे पर्टिकुलर मैसेज भेज सकते हैं आप, एंड या मोर। सो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप देख सकते हो मैंने स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के नाम से एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया है, जिसमें हमारे पास ये रहा मेन क्लास। तो हम लोग इसमें एक सिनेरियो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे यूज़र एक एपीआई हिट करेगा, और उस एपीआई में उसको स्ट्रिंग पास करना है एज एन क्वेरी पैरम, बट द यूज़र विल पास एज नंबर। ठीक है, तो जैसे वो नंबर पास करेगा वैसे एक्सेप्शन थ्रो होगा। एंड अगर वो स्ट्रिंग पास करेगा तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा। तो हम लोग को उस एक्सेप्शन को कैच करना है, और हम लोग वो भी देखेंगे कि उस एक्सेप्शन को वो एक्सेप्शन जब होता है तो फिर क्या मैसेज प्रिंट होता है कंसोल पे, और वही मैसेज यूज़र को ना दिखे, यूज़र को एक कस्टम मैसेज दिखे। तो वही हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, राइट। ओके, सो हम लोग बनाएंगे कुछ पैकेजेस अपने बेस पैकेज में। फटाफट मैं सारे पैकेजेस बना लेता हूँ। ओके, सो हमने अपना पैकेजेस और क्लासेस बना लिए हैं। तो हमने बना लिया सिंपल सा एक कंट्रोलर पैकेज, जिसके अंदर हमने बना दिया ट्यूटोरियल कंट्रोलर। फिर हमने बनाया सर्विस पैकेज, जिसके अंदर हमने सर्विस इंटरफेस बना दिया, राइट, ट्यूटोरियल सर्विस। और उसका इम्प्लीमेंटेशन पैकेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लिया है ट्यूटोरियल सर्विस IMPL, जो कि ट्यूटोरियल सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब फटाक से हम लोग इसके एनोटेशन दे देते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे आएगा रेस्ट कंट्रोलर, राइट, perfect, and request mapping, इसका वैल्यू हम लोग दे देते हैं फिलहाल के लिए ट्यूटोरियल। ओके, परफेक्ट। ओके, नाउ सर्विस IMPL क्लास में भी एनोटेशन दे देते हैं @सर्विस, वैल्यू हो जाएगा ट्यूटोरियल सर्विस इन कैंपस। परफेक्ट गाइस, ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल सा मेथड बना लेते हैं ट्यूटोरियल सर्विस के अंदर। इसका इंटर करते हैं void, और उसका नाम रख लेते हैं एक्सेप्शन चेक। ठीक, परफेक्ट। और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
ओके, सो ना हम लोग काम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन का वो रेडी है। अब हम लोग को अपना कुछ कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कराने पड़ेंगे, राइट। तो जैसे कि मान लीजिए आई एक्सेप्शन आता है, या फिर इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन आता है, या फिर कुछ भी एक्सेप्शन अगर जनरेट होती है, नल पॉइंट एक्सेप्शन अगर जनरेट होता है एप्लीकेशन के अंदर, तो हम लोग वो सारे एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते। हम लोग को उन एक्सेप्शन को कैच करना पड़ेगा और अपना कुछ कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक पैकेज बनाएंगे। पैकेज का नाम मैं रखता हूँ एक्सेप्शन, और इसके अंदर हम लोग एक अपना एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, राइट। मैं बोल देता हूँ ट्यूटोरियल कस्टम एक्सेप्शन। परफेक्ट। सो नाउ इस वाले वीडियो में हम लोग दोनों देखेंगे कि हाउ टू मेक अ कस्टम एक्सेप्शन एंड हाउ टू हैंडल इट। एंड अगर कोई ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो भी डिफॉल्ट एक्सेप्शन है अगर वो हो रहे हैं तो उनको भी कैसे हैंडल करें। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी अपना कुछ आप कस्टम एक्सेप्शन बनाते हो, तो दैट कस्टम एक्सेप्शन शुड एक्सटेंड टू द एक्चुअल एक्सेप्शन क्लास, राइट। सो मैं यहाँ पे कर लूँगा एक्सटेंड्स base exception, that is the exception class for all the exceptions in Java, right? Okay, तो यहाँ पे हम लोग को वार्निंग आ रहा होगा, हम लोग को इसको मेथड्स को मतलब हम लोग को एक सीरियल वर्जन आईडी चाहिए होगी, तो आप डाल भी सकते हो, आप इसको छोड़ भी सकते हो, मतलब वार्निंग वो रहेगी, पर वार्निंग हटाना तो आप डाल दो सीरियल वर्जन आईडी, को दिक्कत नहीं। ओके, सो इसमें हम लोग कुछ फील्ड्स बना लेते हैं जो कि हमारे ही काम के लिए आएगा, बिकॉज हम लोग चाहेंगे कि कुछ कस्टम स्टेटस कोड हम लोग यूज़र को भेज पाए, राइट। जैसे कि मान लो अगर एपीआई हिट होती है और गलत क्रेडेंशियल्स डाल देता है यूज़र, ठीक है, तो दैट इज़ एक्चुअली 401, बट हाउ एपीआई विल अंडरस्टैंड कि ये 401 है, हम लोग को एपीआई को बताना पड़ेगा इट इज़ अ 401 एरर, अभी 401 इट्स अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन, राइट। सो उसके लिए हम लोग को एक कस्टम फील्ड बनाना पड़ेगा। हम लोग इस वाले को कुछ भी रख सकते हैं, चाहो तो आप 1 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। Then we'll create some field private http status code, http status, and putting the private string message, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने बना लिया, हम लोग इसको गेटर सेटअप बना लेते हैं। source generate getters and setters, generate for these two only, हमको कुछ काम नहीं तो नहीं बनाएंगे फालतू में, राइट। ये हो गया। हम लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। सो जस्ट जनरेट द कंस्ट्रक्टर, source generate constructor using fields, will only include these two, right, ताकि आपको ऑब्जेक्ट आना पड़ा, दैट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करो स्टेटस और मैसेज का, और वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ये जो सुपर है, ये सुपर एक्चुअली क्या होता है अगर आपको पता हो, तो सुपर मेथड जो होता है किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसका जो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करता है। तो बेसिकली जो सुपर अगर यहाँ कॉल हो रहा है तो ये एक्सेप्शन का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको कॉल करेगा, राइट। तो एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर अगर जानते हैं एक्सेप्शन के बारे में जाओगे तो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, हालांकि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होता है तो बहुत सारे वैल्यूज ले सकता है, बट हम उसका स्ट्रिंग वैल्यू जो लेता है उसको लेवरेज करेंगे और यहाँ पे अपना जो मैसेज आ रहा है उसको पास कर देंगे, राइट, ताकि हम लोग इसको एक्सेप्शन क्लास के थ्रू रिट्रीव भी कर सकें, ठीक है। परफेक्ट। तो हमारा कस्टमर एक्सेप्शन क्लास बन चुका। आप इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चाहो तो ये सिंपल स्ट्रिंग ना रख के आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कर सकते हो, कि आप चाहो तो एक साथ बहुत सारे एरर मैसेज भेज रहे हो। सपोज लाइक अ सिस्टम वेयर अ यूज़र और एडमिन कैन अपडेट यूज़र लिस्ट, सो एक साथ वो बैचेस में यूज़र्स को अपडेट कर सकता है। लाइक सपोज 20-30 यूज़र्स को साथ में अपडेट कर रहा है, तो वो एक लिस्ट अपलोड करेगा, फिर सपोज कर एक फाइल होगा, CSV फाइल या फिर एक्सेल शीट होगी, उसको वो अपलोड करेगा, उसमें जो डेटा रहेगा उसका वो आपका सर्विस रीड करेगा डेटा, और अकॉर्डिंगली वो डेटा इसमें सेव करते हुए जाएगा।
आप सपोज कर लीजिए कि उस 20 लिस्ट में से 10 लिस्ट जो है वो एरर है, मतलब 10 लोगों के जो डिटेल्स है वो एरर डिटेल्स है। मान लीजिए आईडी सही नहीं है, आईडी जो है दी हुई है उस लिस्ट में वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती डेटाबेस के अंदर, या फिर ईमेल करेक्ट नहीं है, या फिर नंबर सही नहीं है, कुछ भी दिक्कत है उस डेटा में, तो आप अगर सिंपल एक लाइन बोल दोगे कि भाई आपका फाइल अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि कुछ तो फाइल में दिक्कत है, तो यूज़र को उतना सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज यूज़र का जो 30 लोगों का डेटा है उस फाइल के अंदर, उसमें 20 लोगों का डेटा तो सही है, तो एटलीस्ट उस 20 को तो अपलोड करो, बाकी जो 10 है वो बताओ कि ठीक है इन 10 लोगों का डेटा गड़बड़ है, तो आप कैसे बताओगे? तो आप लिस्ट में मैसेज भेज सकते हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर सकते हो, इसमें बोल सकते हो कि पर्टिकुलर जिसका आईडी गलत है, फिर नेक्स्ट इसका आईडी गलत है, तो वो आप एरर भी सॉल्व कर सकते हो उस तरीके से। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपके पास स्ट्रिंग को मैसेज करिएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो रहेगा, राइट। या ओके, सो दैट इज अ थिंग। एंड फाइल रीडिंग भी हम लोग शायद फ्यूचर में सीखेंगे अपने इसी चैनल पे। सो या स्टे ट्यून कि कैसे फाइल रीड करते हैं, कैसे फाइल प्रोसेस करते हैं जावा के अंदर, कैसे पीडीएफ फाइल बनाते हैं, कैसे एक्सेल फाइल बनाते हैं, सब कुछ सीखेंगे। आई हैव got you guys covered here, okay, just stay tuned. Fine, so we have now our custom exception class. Now very important thing that we would need is our exception control advice. Now what is that? Okay, before that let's just create our APIs and all. Okay, so I just have my service class, service interface here, right? I'll do a constructor dependency injection. Okay, I have a method which will return a response entity of type string. Dummy API. You can name anything. Okay, string की spelling गलत हो गई guys. Okay, dummy API which will take request param of type string, param1. Okay, and yeah, that's all. Now we'll just have to make a method in our tools. Okay, we already have, right? Exception check. So we'll call our service method, sorry, tutorial service dot exception check, and currently it is not taking any value, so let's add it here. Text string param1. We'll pass the param here itself. Okay, now we have to return something, right? So we'll return new response entity times type string, and we'll pass success and http status code dot ok. Perfect. Okay, now I'm not catching anything here because it is a void method, so it won't return anything. So if the first control will come on line number 23, and if the control is coming to line number 24, that means nothing happened in this nothing error happened in this particular method, so no exception has been thrown, so we are good to go, right? So now next thing is we have to implement the method here. Fine. Okay, so this is param1, right? So we'll throw the exception dynamically. So for that we'll do one thing, we'll check if param1 dot equals throw,
right? Then throw new exception. So basically we'll pass this param1 from our postman. So basically we'll test the API, we pass this param1 as throw. So whenever we'll send param1 as throw, so this particular method will throw an exception, right? And if we don't pass throw, so it won't throw an exception. So we can check like it is throwing the exception or not, right? So we'll throw our exception. What is our exception class name? It's tutorial custom exception, right? Tutorial custom exception, which accepts two value, HTTP status and string message, right? So HTTP status will pass a bad request. You can pass in based on your condition. You can throw any kind of status code. For now, I'm throwing a bad request. Maybe it is a authorization issue, so you can throw 401. If it is not found, you can throw 404. Or if it is internal server, I will throw 500. So something like that, right? And in the message, I will say, you asked me to throw a bad request exception, right? Basically, if you are deliberately asking it to throw, so that's what the message is. If it is, then else do nothing, right? Or maybe we can say else, yeah, else do nothing, right? So yeah, for now, let's keep it like that. Now this IDE is yelling at us because it's not about the IDE, it's actually when we are throwing an exception, so we have to declare the exception, right? That this particular method will throw exception. We need to declare it. Basically, it's a checked exception. So we have to add this throws declaration here, that to let the people know that okay, this particular method will throw exception. Now it's giving error here because it is an overridden method in this class, and its parent where this method has been declared, there it should also say throws tutorial custom exception. I'll show you one very unique thing, guys. Okay, right? So now, as soon as I add this line here that it throws, so the error will gone. You see, no errors. But what if I just remove it here and I say just exception? Right? I just say throws exception, and I save it. Now, still everything is perfectly fine. No error we can see, right? No error in the project. No error in this class. Why? It is because if you open tutorial custom exception, it extends the exception. So when I'm saying in the tutorial service that it throws exception, but in tutorial service IMP, I'm saying it throws tutorial custom exception, right? So its parent says that it throws exception, and tutorial service simple says it throws tutorial custom exception, which is a child of exception, because our tutorial custom exception is extending to exception, which is a parent one. So if you are saying parent is already, we have already declared that it throws parent, so children comes into it, right? But if we do the reverse one, let's see if it works. Yeah, let's see if it works. We'll say here Control C, we'll say it throws tutorial custom exception, we'll save it, no issue. But here we'll say it throws exception, right? And save it. Now the error occurred. Why? Because parent says that it throws tutorial custom exception, but in here where it has been overridden, we're saying it throws the exception, which is not the same case, because you need to understand, exception is a parent class for our architecture, right? Because our custom exception is extending the exception class. So here exception is a parent class and tutorial custom exception is a child class. When we are saying that this method, while declaring the method in a service class, we are saying this method throws a particular type of exception, that is tutorial custom exception. And while in service IMPL, we are saying it throws all the exceptions, which is not correct, right? But if a class is throwing exception, that means it can throw all the exceptions. So if we are adding exception here, we are declaring that it throws exception class, that means it can throw any kind of exception, and we can, here we can add any exception here, right? It is perfectly fine. You need to understand
Exception is a superset of all the exceptions. So all the exceptions come under exception class, right? All the custom exceptions, all the defined and undefined exceptions, all exceptions comes under exception class. Okay, so you need to take into that in consideration and put it here. Yeah, better to just declare what kind of exception this particular method gonna throw, just to be more specific, right? Because if you just if you just declare it throws exception and it's throwing only one exception, it's better to have more declarative code where other people also can understand what you have written. So here you can very distinctively it says that it throws a particular exception that is called tutorial custom exception. I hope you guys are clear. If not, please drop a comment or try to email us or anyway, because these are the basic concepts. If these are not clear, you cannot proceed. Trust me, I am working in industry and I have seen people in my team or other teams or other people who doesn't even know like how to handle exception or what is checked exception, what is unchecked exception, what is custom exception, how to create own custom exceptions, right? People don't know about it, even though they're working in industries. They're experienced persons, but they don't know because the concept of this particular basic things are not clear. Just they know how to do it, but they don't know how it is working and how this thing works. Why I cannot throw a particular particular exception in the declaration and the parent exception in the implementation. They don't know the difference. They just know this won't work. Now the ID is yelling at us, so okay, it is error, right? But they don't know why the ID is yelling at us, why it is throwing red line there. So you need to clear this particular thing very smoothly and understand it. Don't mug it up. That's what I'm trying to say. Okay, fine. So our API is ready. Okay, so let's try to hit our API. Okay, before that, here see this also yelling because now it says that this exception check is throwing error and dude, you are not handling it here. Understand? So it can give you two options: either do a try catch block or add a throws declaration. So if you do a try catch block, you can catch the exception here and can process it, or you can say throws. So it will add a throw declaration and then the JVM will handle it at runtime, right? Okay, so let us just do add throws declaration and save it. Fine. Now JVM will handle it at runtime because you're not handling it. You are just saying okay, it will throw. So JVM knows that okay, it will throw. Let me handle it at runtime. Now it will handle by itself. Okay, let's see. Okay, now we'll just run our application. Okay, oh sorry, before that we need to define the method. Sorry guys. So here we need to say it's a get mapping or post. So for now let's assume it's a get mapping and we have to define the endpoint. So for now slash. So basically our endpoint will be tutorial and slash, or maybe we can write exception, right? Fine. Okay, so I think yeah, we're good to go. Now we can actually run this application, right? Okay, so run as Java application. And by default Tomcat starts at 8080. So since we haven't defined anything in our application properties file at what will be the server port, so it will by default will be 8080. Yeah, it is 8080. Okay, so let's go to Postman and check it, right? So yeah, we'll say HTTP 8080 tutorial / exception, right? And in query param we are taking param 1 and say we are saying hello. Now if you remember the code we have written, so our service class will only throw exception for the word throw with a T capital, right?
So if we say hello and we just click send, we'll get 200 and success, right? See, we get success with 200. Now we'll explicitly call this as a param, right? We'll send this throw as a param, and I'm just clearing the logs from console. Fine. Now I'll sending it. Now we'll see a error. See, okay. So it's exception thrown, right? And it says 500. Even though here we have thrown a bad request and our custom exception class, but in the response we are getting 500, right? See, and with the message that you asked me to throw a bad request exception, but this trace is also being sent to the user, but that user doesn't want that, right? I mean, what they will do with this information, correct? So we need to handle this, correct? So to handle this, we need to have a class called advice class, that is REST control advice. So in the controller C, we just simply say okay, it throws, so it will throw at runtime. Java handles it, and it handles with that something happened in the application and I'm not able to resolve it. So that is basically internal server error, right? That is code 500. That is what we are getting here, right? See, 500 internal server error. The server has encountered a situation it does not know how to handle. Perfect. So we need to tell the server that what to do in this particular scenario. Like means if something happens, some tutorial custom exception is, if it is being thrown, then what to do. So we need to tell the server a plan. We need a class called custom. We need exceptional control advice. So in our exception package only, I'll create a class exception controller advice, right? Now you can name it anything, just following the norms. Okay, exception controller advice. I'll just finish it. I'll stop my server for a bit because DevTools will try to reload it again and again if I save something. And we need to annotate this class. This is very important. We need to annotate this class with REST controller advice, otherwise it won't work, right? So basically we are saying that if anything happens in the REST controller, right, then please come here. Now, not only REST controller, I mean the entry point for our application will be REST controller class only, right? Any request which is going to come into our server, gonna be first entry point will be REST controller, right? So that is a flow. So that is why we are saying REST controller advice, just like we are calling it REST controller, right? So point is, it is a controller advice. Okay. Now here we need to define our custom class, custom exception, right? Okay. So make the method public, and what kind of a response it should throw. So we will say, okay, response entity of type string. You can return any kind of value from here. Doesn't necessarily that, because in our control class we are returning response entity of type string. So you are thinking, okay, here also we have returned the same, but no, it's on you. For the simplicity, I'm putting it as string. You can throw your own DTO object, your own error object with a lot of data which we want to give to the user. That's on you, right? I'm just throwing a string or returning a string, right? Okay. And you can name this method. You can name anything again. I'm naming it accordingly. So I'll say custom exception handler. So it will take our exception, or maybe basically a class, as an argument. So obviously we'll pass our custom tutorial because we're making it for that. So tutorial custom exception, name this parameter, fine. And yeah, before that we need to tell it, right? We need to annotate this method with exception handler, right? Because we need to tell the JVM that this method will handle our exception, and if you don't provide any value, it will handle all the exceptions. But if you want to provide a value, or if you want a particular exception to be handled by this method only, then you can provide a value in the parenthesis,
So basically we want this tutorial custom exception. Sorry, why it is not coming? Exception dot class. Okay, fine. So this method will handle any exception in your whole project. If it is throwing a tutorial custom exception, so the controller will come here. Okay, fine. So we can define values here, right? Okay. Now you can do a whole lot of processing, like what happened in this exception and what kind of data you need to send. But I'll simply I'll simply say that return new response entity. Yeah, and in the message it will be what is message being propagated by this class, right? Tutorial exception dot get message and HTTP status code, right? So dot I don't know what is happening. Yeah, get HTTP status. Perfect. Okay. So now if I save it and I run the application, so the previously if we saw this kind of a long error thing came, right? But we only need this message and a particular status code. We did not throw 500, right? But it automatically threw 500 for us. But we threw a bad repair, that is 402, I guess, right? That's what we threw. Okay, so let's see if it works this time. Now we'll again hit this and see. Perfect, right? See, we got, you asked me to throw a bad request exception, that is 400. Okay, so yeah, that's how it is working, right? I mean, see, in the service example class, you see here we have thrown, you asked me to throw a bad request with a bad request status, that is 400, and yeah, we got it from the response also in Postman. So yeah, that's all I think. Yeah, now in the exception control advice, I'm just, whatever message I'm getting and whatever status code I'm getting, I'm just simply returning it. Now before returning it, you can have multiple things, like you can add timestamp, you can add more value, that what is the path, or some extra messages, or the user details, or which user due to which user this exception has been thrown, or what was the actual cause. Anything you can do here, and not necessarily need to return a string. You can return a DT out of it, right? So yeah, just play along with it. You'll know how to do it, and once you'll do it yourself, you'll get the motivation and you'll get the courage to do it again and again. And it's very fascinating, guys. You can throw your own exceptions, right? You can create your custom exception and throw it. No need to rely on the JVM itself. Now it's throwing tutorial custom exception, right? If something else happened in the code, so it's suppose a null pointer or something, so it's always 500, right? Internal server error. If you don't want user to show internal server error, something happened bad out here, so you can make another method here, right? And you can say exception.class, right? Exception.class, and you can pass the exception here, right? What I'm trying to get at is here, and HTTP status dot internal server error, right? Can throw this, like whatever exception is coming here, you can throw it. So if particular tutorial exception is coming, then it's okay, you can handle it here. But apart from that, if any exception is coming, you can handle it here, right? So suppose in the
service impl, we say else throw exception, else throw exception, new exception, right? Throw new exception, right, with the message, bro, I can't do it, right? Now generally what happens, it will say something, internal server error, I cannot do anything, right? You can create your own messages and you can throw it. So now it's yelling at us because we have said here in the service interface that it can only throw custom exceptions. So I'll just remove it and just keep it here, right? Save it. Now what? So we have to add throws exception, so it can throw all kind of exceptions now. Perfect. Here also. To save all the files. So before, if 500 was coming, then there was some custom, there was some default tracking were coming, right? Stack trace was coming in the return. But now if 500 comes, basically for throw it will throw 400. For any kind of value it will throw 500 now, because as we have implemented the code, we have seen if it is throw, then throw 400 bad request for total custom exception, and if it is anything else, just throw a general exception, which is 500, right? Because in the ControllerAdvice we have said that if exception.class, then throw internal server error. Perfect. Then I'll just say, come on, hit, and let's see what happens. Yeah, see, bro, I cannot do it for 500 internal server error, right? So yeah, that's cool thing. You can play along, you can make your own custom exceptions and throw it, and have it does not necessarily have to throw a string only and just keep on repeating this thing and stressing over it. You can create your own D2 and send it from here, right? Yeah, so I think video is getting very long. I'll stop it here. Yeah, so that's it for this video. Let's meet in the next one. Till then, keep coding and keep learning.